मॉर्निंग जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है पहले तो ये बताओ बेटे। F5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू नॉलेज लेवल, एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स, क्योंकि इसमें F2 की नॉलेज भी यूज़ करनी है, थोड़ी सी नई टेक्निक्स भी यूज़ करनी है। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो मुश्किल लगेगा नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका रिजल्ट, पास परसेंटेज देखें तो कुछ कम आता है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स, बट भूपेश आनंद के स्टूडेंट का कम नहीं आता। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ा सा जोश दिखाना है, थोड़ी सी बातों को समझना है और फिर आगे चले जाना है लॉजिकली। आइए इन्हीं बातों के साथ लेक्चर नंबर 10 के बाद आज हम 11 लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। बेटे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट कर्व्स बताए, आपको ये बताया कि व्हाई इट डिक्लाइंस एंड देन व्हाई इट मूव्स अपवर्ड, व्हाट आई मीन बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय टोटल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय फिक्स कॉस्ट। इन सबको बताने के पीछे मेरा लॉजिक था कि यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट। बेटे एल्जेब्रिक मेथड कर लेंगे ना, आप पहले ऊपर रजिस्टर लिखिए जी, रजिस्टर खोलिए, लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजंस। और आज थोड़ा सा मैं आपको एल्जेब्रिक अप्रोच के बारे में बता दूंगा बिकॉज आई हैव डिस्कस सो मेनी डिफरेंट कंसेप्ट्स। मैं आज टुडे I will be telling you that when I say algebraic, it means I will be using algebra, I will be using equations, I will be using some functions. मैं कुछ algebra का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन भूल जाइए algebra। मैंने आपको सारी बातें धीरे धीरे बताई। लेक्चर 8 में आपको इक्वेशन समझाई, फिर लेक्चर 9 में इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर लेक्चर 10 में आपको लास्ट लेक्चर में मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट की बातें बताई। इवन अलजेब्रा नहीं भी किया, इवन मैथमेटिक्स नहीं भी की, इवन आपको कुछ भी नहीं मालूम है, भूपेश आनंद का लेक्चर सुन लोगे तो सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आइए बेटे कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेक्चर नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। बेटे मुश्किलों का सामना करते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी, करके दिखाना है। आए हो तो कुछ करके जाओ यार, इससे पहले कैसे ऐसे चले जाएं। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में हम पहली बात आपको यूज ऑफ एल्जेब्रा की बात हम करेंगे नो डाउट, बट घबराना नहीं है। हमने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय इक्वेशन, व्हाट आई मीन बाय फंक्शंस, व्हाट आई मीन बाय दिस, व्हाट आई मीन बाय लीनियर इक्वेशन, व्हाट आई मीन बाय लीनियर इनइक्वालिटी, वो एलपी में वैसे ही बता दिया था। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल करेंगे, विच यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट। आज के लेक्चर में मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू बता दूंगा और फिर ये भी बता दूंगा दैट व्हाई इट इज अ प्रॉफिट मैक्स ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल सेम होंगे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट क्यों है, उस पॉइंट को निकाल लेंगे। वहां से क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल पुट इन द प्राइस इक्वेशन एंड वी विल कैलकुलेट द प्राइस बिकॉज आई एज ACCA वांट टू कैलकुलेट दैट प्राइस। सब कराऊंगा। आज लेक्चर 11 है ना, लेक्चर 12 में सारे क्वेश्चन, सारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको आज बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब, मार्जिनल रेवेन्यू जनरली मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो मैं आज आपके सामने यही बातें डिस्कस करूंगा दैट हम इंतजार करेंगे, इंतजार की घड़ियां कांटे नहीं कटती। मार्जिनल रेवेन्यू धीरे 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 कम होता जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट भी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के कम हो जाएगा बेटे, लेकिन उससे पहले दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा कि उस पॉइंट का नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। As per economical theory, profit can be maximized at this point. बेटा इकोनॉमिक्स ये कहती है, इकोनॉमिक्स ये कहते हैं, डिमांड अप्रोच ये कहती है कि आप प्रॉफिट उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। आज के लेक्चर में उसका लॉजिक मैंने दिया है, वहां से क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी, अभी हम देखेंगे, वहां से प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। बेटे आप बस घबराना मत,
वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। मैंने आपको लेक्चर में आज ये भी बताना है कि वाइल कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू आप स्लोप का 2 टाइम्स क्यों करते हो। प्राइस इक्वेशन में स्लोप होती है, ग्रेडियंट होता है, उसको डबल क्यों करते हो, अभी बताएंगे। जैसे ही आप डबल करते हो तो वो प्राइस इक्वेशन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है सर। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये पता ही है। मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें पता है, हम इक्वेट करेंगे और उसमें से क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस इक्वेशन में डाल देंगे, प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। आप अगर सच में अच्छे बच्चे हो गए ना तो ये पॉइंट नंबर 7 जरूर लिखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। आज के लेक्चर का सार है, जैसे गीता का सार। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट वी विल फॉलो economist view and equate marginal cost with marginal revenue। मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वेट कर देंगे एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, जो भी क्यू की वैल्यू होगी उसको प्राइस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि प्राइस इक्वेशन आपको पता ही है P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स होता है बेटे। लास्ट लेक्चर नंबर 8 पूरा लेक्चर इसी पे डिवोट किया था। देखो जी, मुश्किल कुछ है नहीं, वो बात अलग है कि आप ये देखो जी, ये जो एल्जेब्रिक अप्रोच है, इसमें हमने आपको सबसे पहले इन द लास्ट लेक्चर नंबर 10th लेक्चर नंबर, मतलब आप ये देखिए ना, मैंने आपको लेक्चर नंबर 10th में मार्जिनल कॉस्ट का ये कर्व कैसे आता है ये बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ये बताया था। आज के लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये वाला पॉइंट ऑप्टिमम क्यों है, यहाँ से हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और फिर इसको प्राइस इक्वेशन में कैसे पुट कर देंगे, और उसके बाद प्राइस इक्वेशन में पुट करके हम प्राइस कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा ये सारी बातें बीबीबी कर लें तब उसमें भी है, कैप्लन देख लें उसमें भी है। बेटे घबराने की बात है नहीं, भूपेश आनंद आपको A to Z सारी बातें बताएगा। मैंने 10-12 मिनट का छोटा सा वीडियो अटैच किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू एंड व्हाई मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू वेयर दे आर इक्वेटिंग, व्हाई दैट पॉइंट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको लिखेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एक्सप्लेन किया था बेटे, वो 10-12 मिनट का है। मुझे पता वो थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया मैंने, लेकिन द पॉइंट इज अगर मैं टू द पॉइंट बताऊंगा तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ता है। तो बेटे मैं लेक्चर नंबर 12 में मिलूंगा, पूरी टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पूरे क्वेश्चन हम करेंगे, मज़ा आने वाला है। आप रजिस्टर ओपन करके, कमर सीधी करके, मोबाइल फ़ोन ऑफ करके सारी बातें नोट कर रहे हैं। So first point is the profit maximizing quantity of output is the output for which the difference between, it is that output, you know, what is the profit maximization output? It is that output for which the difference between total revenue and total cost is at maximum, the difference between total revenue and total cost is at maximum, and then after adding this, write this formula. Maximum profit is when total revenue minus total cost. When I say total cost, I mean variable cost, and I also mean fixed cost. So the first point is the profit maximization quantity for output is the output at which, you know, my total revenue, my total cost is maximum. It means the I should produce at that much level of output where I can maximize my profit. That level of output is named as maximum output level. Now how I can achieve that? For that I will be comparing the marginal cost with the marginal revenue. The point where my marginal cost is less than marginal revenue, I can maximize my profit to an extent. But when my marginal cost is equal to marginal revenue, that is a point where I should not produce more unit. I repeat, when my marginal cost is equal to marginal revenue. Now what is marginal cost? I have told you, but still I will be telling you that the cost which is incurred for producing one additional unit, that is marginal cost, and the revenue is the revenue which a firm can realize by selling one additional unit, that is marginal revenue. So the level of output at which marginal cost is equal to marginal revenue, that level of output I will say is named as, you know, the level
at which I should stop my production, because if I produce more, then my marginal cost will be more than marginal revenue. So please write on first point, the profit maximizing quantity of output is the output for which the difference between total revenue and total cost is at maximum. The point of profit maximization is equivalent to the output. No, again, I have told you the point of maximization, the point of maximization is equivalent to the output for which marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. The point of profit maximization is equivalent to the output for which marginal cost is equal to marginal revenue. It means I will be at that level where marginal cost is equal to marginal revenue. So let me start with the journey case study. Just I have given a case study for explaining that how marginal when marginal cost is equal to marginal revenue, I should stop at that point. Suppose a firm is producing one additional unit at a cost of $10 and selling that at $30. Supposingly, we are assuming that. So marginal cost is $10 and marginal revenue is $30. So it is beneficial to produce it, because for producing one more additional unit, I have to just incur $10 and it can be sold at $30. So I can earn $20 of profit. So for example, if the following is the schedule that for producing one more unit, I am incurring $11, because I have told you that marginal cost will firstly decrease and then it will increase. Now it is increasing at $11. Now next unit which we can produce is at $11, but it can be sold at $29. Similarly, $12. The next unit which we can produce is at the cost of $12, but it can be sold at $28. So it is beneficial to produce it. But supposingly I reach at the last point when my marginal cost is $20 and when the marginal revenue is also about $20. Both are at $20. So that at this point I should produce, but I should not go beyond that, because my maximum profit will be at this level when my marginal cost is equal to marginal revenue. Beyond this point, my marginal cost will be more than marginal revenue, so hence I cannot achieve maximum profit. And below this point, again, my marginal cost is less than marginal revenue. I can get more profit if I do a more step. So the point is, the point which I want to discuss is that which is that point of output where my profit can be maximized. Firstly, I have told you I should do that much production. Apollo Tyres should do that much production. General Motors should produce that much cars, where total revenue, my total cost, that is profit, is maximum. Now which is that point where profit is maximum? The point where marginal cost is equal to marginal revenue, that point where both intersect each other, that is named as the point of maximum level of output, because I can achieve maximum profit at that point. So that I have just told you with the example. Just I think you must be preparing this. So I have written this is a point where we should stop. It means the firm should stop producing more, because if they will produce more, now the cost per unit will be 21, and now you cannot sell at more than this. I am just hypothetically assuming that if you can sell at $19, it implies that there will be a loss. So you should stop at this point. So this is a quantity at which you will able to extract maximum profit. It means it is the quantity. It means it is the quantity at which you can able to extract the maximum profit. Please write on third point. A firm should increase production as long as marginal cost is less than marginal revenue. Just see here, a firm should produce production as long as marginal cost is less than marginal revenue. It means the firm should increase, but should stop at this point. Because when marginal cost is equal to marginal revenue, that is the optimum point beyond which it will be having a loss. So just see, a firm should increase production as long as marginal cost is less than marginal revenue, because addition to total cost from additional production is less than
It means addition to total cost, addition to total production cost is less than the addition to total revenue. It means there is a more addition to revenue as compared to addition to total cost. So it should produce at that level, but it should stop where a marginal cost is equal to marginal revenue.